Parizaad definitely when I so Parizaad की कहानी कुछ ऐसी थी कि मैंने दो एपिसोड्स पढ़ी मैंने 2 एपिसोड्स पढ़ी एंड मैंने कहा ये 2020 में आप मुझे क्या दे मतलब it doesn't I don't why even offering this to me it does not look like me I don't know क्या what they था? were What thinking was the description of the character? उसके चेचक के दाग हैं Right. डार्क स्किन है एंड it तो बस मैंने इतना सा ही थोड़ा सा पढ़ा उसकी बर्थ का सीन होता है I was like, okay, I don't know. You should give it to somebody who. Is this how you see me? Yeah. Or I mean, like, give it to somebody who looks the part. Yeah. And I said no. 6 to 7 months later, Zahid, the AD, a good friend of mine, and Salman, my manager, really good friend of mine, said, you always wait for a good script, and this is one of those scripts. Just give it a read. पढ़ तो लो पूरी तरह. I was like, okay, मैं पढ़ता हूँ. मैं अपने कमरे में अपने टीवी पे स्क्रिप्ट अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके ना बड़ी बड़ी नजर आ रही होती है मुझे एंड मैं उस तरह पढ़ता हूँ वॉकिंग पेसिंग एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई शेड अ टीयर when I read Really? the script. Yeah. At what point? It was after the 15th episode when he comes out of the prison. तो जेल से निकलता है, that's when he starts to express. उससे पहले दबा हुआ बंदा है, बोलता नहीं है. और जब मैंने पहले 15 पढ़े तो मुझे उसमें क्योंकि वो बोल नहीं रहा तो आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड हु ही इज. जब मैंने अगले 10-15 पढ़े इट स्टार्टेड टू बिकम क्लियर एंड आई फिगर्ड आउट कि इसकी वजह से आई नो हाउ टू प्ले द फर्स्ट 15. Right. And I was like, this guy is, there are a lot of things that are similar to me, his philosophy on life, outlook on the world. Okay, I am interested, but how do we do this? Yeah. This look part, this Yeah. get-up part. मैंने उनसे बात की. मैंने 3 एक्टर्स सजेस्ट किए कि इनसे करवाएं. मैंने 3 एक्टर्स और like these guys इनमें से 2 थिएटर के थे जिनको मौका नहीं मिला था उस वक्त तक. अब they're on TV. आप नाम नहीं लेंगे इसलिए मैं पूछूंगी नहीं. हाँ, नहीं. But phenomenal theater actors. I was like, ये इन लोगों से करवाएं. Surround them with the big actors. Yeah. And you will have something nobody's ever done for TV. You will change TV. But I think for understandable reasons, protagonists, you have to sell the drama. Yeah. And फिर मैंने पूछा, okay, if not these guys, कौन? तो जो बाकी नाम बताए वो different, उसी तरह मेरी तरह different गोरे चिट्टे लड़के थे. Like I'll take the risk, I'll do it. अब मुझे बताएं कि चेचक के दाग का क्या करना है. कैसे करेंगे? बट क्योंकि मुश्किल काम है. और ये इंटरेस्टिंग है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज उस वक्त बहुत लोगों ने ये ऑब्जेक्शन रेज की थी कि ओ व्हाई टेक अ गोरा लड़का एंड मेक हिम डार्क, व्हाई नॉट टेक अ डार्कर एक्टर. सो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप कि आपने सजेस्ट किया था. बिल्कुल. एंड फिर ये हुआ कि मेकअप टेस्ट किए. वो दाग बनाना अंडरस्टैंडेबली टीवी के लिए बहुत मुश्किल है. Right. आपका मेकअप का बजट इतना ऊपर चला जाएगा कि आप बहुत मुश्किल था. सो मैंने विटिलिगो सजेस्ट किया. विटिलाइगो होता है. एंड मैंने वो उसके भी मेकअप टेस्ट, आई हैव पिक्चर्स. मैंने कहा दिस हैज टू बी समथिंग जो वो कैरेक्टर बिकॉज वो हमेशा कहता है एक नजर, एंड ही नोटिसेस पीपल सीइंग हिम. And I read the whole thing again, and I realized his issues have to be internalized. Right. It's not external. Right. Because मैं सिर्फ dark skin होने पे एक बंदे की खूबसूरती की नहीं करूँगा. Exactly. The other characters were dark skin. तो मैं उस पे नहीं करूँगा. I will internalize his issues. Right. सारी चीजें मैंने वो दोबारा पढ़ा कि कुछ conflict या contradiction तो नहीं हो जाएगी. नहीं हुई. I was like, I have to change a lot about him. It is all because of society. सारा उसकी source out. और society तो करती है. Victimize या. Source बाहर से है, लेकिन उसका मसला अंदर पकता गया. And इसलिए वो इतना timid, low self esteem इंसान. दिल भी टूटा उसका, धुतकारा भी गया उसका. हाँ, वो तो स्टोरी में हुआ. स्टोरी से पहले तक वो वहां तक जो पहुंचा है वो जो वैसा है. I had to build that, and then that is why he was the way he was. In script में थोड़ा सा फर्क था,
So I had to internalize all of his issues, and that was the challenge, and I loved Right. playing it. कोई ऐसे practice नहीं की मैंने उसकी मैं किसी पूछने चीज लगी की. थी कि what was the method of adapting to that character? आपका Just- generally क्या होता है? Do you look for people in society like that? वो कहीं ना कहीं क्योंकि I was always an observant kid, तो लेता हूँ मैं information हर जगह से, लोगों को observe करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया है और कहीं रहा Right, है. But right. mainly it was internalizing his who he is, Right. to understanding who he is deep down inside. He's an artist. He's sensitive. He's a poet. Because he's a poet. Yeah. You know, he loves music. He loves the Yeah. piano. I love the piano. Yeah. मैंने कितने से piano पे सीखा था. हाँ. A lot of similarities. And he's sensitive. He has trouble expressing so many things that were, you know, parallel to my own personality. And yeah, so मैंने कोई practice नहीं की. Just read it. The answers are between the lines. Hashim बिल्कुल. Nadeem had written a phenomenal script. Yeah. Beautiful character. इतना अच्छा कार्व हुआ था. सारी उसकी philosophy on life, सारी उसकी ideology, सब कुछ अंदर थी उसमें. I just had to internalize. I had to go back to, जब भी कोई सवाल मेरे अपने जहन में उठता था, who he is, उसका कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में जवाब था. And I had to recall it. I was like, this is the guy. This is what he thinks. He's plain, simple, straightforward. He just had trouble being who he is, accepting who he is, and which he did up until the last moment. And I love that about the character. Self discovery पे निकला था. And उसके साथ साथ उसको circumstances क्या कुछ दे ending देती है. change की. Ending change की. And Hashim Nadeem Saab is amazing. You know, what a guy. We all sat together क्योंकि थोड़ा सा changes थे from the original, and हमने फिर decide किया, मैं Zahid AD, Shahzad bhai the director, Hashim Nadeem, we would sit while the shoot was going on कि क्या करना चाहिए. And सबने अपना अपना view बताया, and I was like, okay, so the character that I've sort of built, I feel like the only thing that's truly his is Urdu. Nothing else. The money, everything else is extra. वो तो आके गिर गया उसके. जो उसका अपना है वो है उर्दू. And he would go back क्योंकि वो एक किसी को मरवाने लगा था. और वही बंदा बनने लगा था जो उसको खुद नहीं पसंद. And he had to step back and he had to rethink who he is, because वो परिजाद से दूर होता जा रहा था. The innocence of Parizaad. So he had to step away from all the shohrat, the money, and try to find himself again. Right. And the only thing he could give back is Urdu. So I saw him somewhere far teaching Urdu. And so उस तरह उनको भी अच्छा लगा idea, and उनके भी इस तरह के similar ideas थे, and सब मिल मिला के बड़ा अच्छा बन गया. बहुत